Yes, class. Yesterday we were solving exercise number 3.3. In this one, how to divide the different number by 10, 100, 1000, 10,000. So accordingly, what we have done? See, suppose any number is divided by 10, so we shift the decimal to the left side according to the number of zeros. And in previous exercise or in the same exercise in the previous class we have done. So today divide the following decimal number. Exercise question number 5. Divide the following decimal numbers. Following decimal number question A 4.56 divided by 0.0456. So this is 4.56 divided by 0.0456. This you have to solve. Both are the decimal numbers and how to divide this one. So in the division it is better to remove the decimal from the divisor, as well as we can remove the decimal from here also. So then we will get the fresh number without the decimal, and after that we can divide it. Now the question is how to remove the decimal. So suppose any number, suppose 2.38 is given to you, and if you want to remove this decimal number, so here this can be written divided by 1. Any number can be written divided by 1. So there won't be any change. 4, suppose 4 is written, so 4 you can write 4 by 1. So after that, see, after decimal how many digits are there? So after decimal how many digits are there? 2 digits are there. So if you want to remove this one, so after removing here, according to the number of digits after decimal, we can put the 2 zeros. So this 2.38 we can write 238.100. Again this 4.475. This you can write here upon 1. So this you can write 4.5 upon 1, and this when you are removing, so you can increase the 30. So this way you can remove the decimal. डेसिमल को हटा करके हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको हटा करके हम डिनोमिनेटर में उतने जीरो लिख देते हैं. और सपोज 1.475 दिस इज, सो रिमूव दिस डेसिमल एंड इंक्रीज द सेम digit zeros 30. So this way you can remove the decimal. Same way here we will try in your content duster there. So this way, this is your question. So this 4.56 upon 0.0456
When you are moving this decimal, here you can increase 2 zeros. And here removing this one, 1, 2, 3, 4, 4 digits are there. 1, 2, 3, 4. यहाँ का डेसिमल जब हटाएंगे तो ऊपर हम 4 जीरो इंक्रीज कर सकते हैं. यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा. यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो 1, 2, 3, 4 here. So this 2 zero you can cancel here. So ultimately how much it is coming now? Now it is coming on behalf of 4.56 and 0.0456. इसकी जगह पे इसको कट करने के बाद डेसिमल का जीरो बढ़ाने के बाद ये हो गया तुम्हारा 45600 45600 upon this is removed, so it is coming 456. So on behalf of this, what we have done? We have removed the decimal from the dividend and divisor both. Dividend and divisor से हम decimal remove कर देते हैं and after that we will get the without decimal number. After that we can divide it and whatever the result is coming, that will be the answer. So 456 and 456 here one time जाएगा 100. So this is coming 10 and this will be the answer of your question. So this is the way of dividing the decimal numbers. It's clear? Now see second part B. 134.78 divided by 0.4. This you have to do. So what you will do? This you can write again same way. 134.78 upon write same thing 0.4. यहाँ से डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो 2 डिजिट है. हियर यू कैन इंक्रीज 2 जीरोस और यहाँ से डेसिमल करेंगे तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 1 डिजिट है तो यहाँ 1 जीरो एंड दिस जीरो यू कैन कैंसिल. तो अल्टीमेटली कितना होगा 13478 डिवाइडेड बाई ओनली 40. अब 40 से इसको हम डिवाइड करते हैं एंड व्हाट एवर दिस आंसर विल कम that we can write. So 13478 divided by 40. So after division we can find out the answer 3.3. That is what? That is just 3.3. Question number 5, 3.3, question number 5. .56, 3.3, question number 500 and this way. So this division you have to do now. So what I mean, अगर डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है तो इट इज बेटर टू रिमूव बोथ द डेसिमल्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल एज आई हैव टोल्ड यू. आफ्टर दैट यू कैन डिवाइड. नाउ अब सिंपल इसको डिवाइड करने के लिए दिस वन थिंग यू कैन डू. 2 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 से इसको कट करोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा. 2 से इसको कट करोगे तो 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 2 3 ja 6, 1 remaining 6 3 7 9. Now after that you divide 6 7 3 9 divided by 20. 20 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 23 60 7 मिनिमम 3 कैरी 20 24 जा 80 बट 23 या 60 13 will come 39 26 ja 120 26 ja 100 26
19 will come, and after 19 put the decimal here, put the 0 here, here also 0, so it is coming again, put the 0 here, so it is 29 ja 180 and 125 100. So this is coming after dividing this one, 336.95. So this is the answer of the B part. Clear? So this is the way of dividing the decimal number. So 3.395. Clear? Now just see question number C. See here. C is what? 0.0056 divided by 0.07. So better to remove the decimal. इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 6 जीरो करके कैंसिल करने के बाद अगेन. सो हियर व्हाट विल कम? 0.0056 divided by 0.07. इस डेसिमल को रिमूव करो, इंक्रीज 2 जीरो, 2 डिजिट आते हैं, और इसको करने पे हाउ मेनी जीरोस आते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आते हैं? 1 2 3 4. सो हियर यू इंक्रीज 1 2 3 4. यहाँ से दो जीरो कट करो. So ultimately how much it is coming? It is coming 56. So 56 divided by 700. 56 divided by 700. So divided by 700. So this you can simplify. Both numbers you can cut by 7. तो 7 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 100 हो गया. 7 8 टाइम. अगेन 4 2 जा 8, 4 25. अब कितना होगा ये? 2/25. 2/25 को 2 को 25 से जब हम डिवाइड करेंगे so it will not go. So here first you put 0.0 0 0 25 8 ja 200. So it is coming 0.08. So this will come 0.08. So answer of this question will be how much? 0.08. So 0.08 will be the answer of C part. Now we will see the D part. So A, B, C. Now let us move for the C part, D part. So D also here D 0 point. This is 0.0232 divided by 0.8. This also do the same way. First you remove the decimals. 0.0232 divided by 0.8. So 0.8 इस डेसिमल को यहाँ हटाएंगे, पुट 1 जीरो, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 एक जीरो you can cancel. Now it is ultimately it is coming how much? 232 upon 8,000. 8 So
दिस यू कैन सिंप्लीफाई बाई 8 से सिंप्लीफाई करने पे इट विल कम 1000 एंड 8 से इसको सिंप्लीफाई करने पे 8 टू जा 16 प्लस 7 8 9 जा 29. Now this has become 29 upon. So in the division what I have told, अगर जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ जीरो इज हाउ मच, 3 zeros are here. So here decimal will come after the 3 digit. So this you can write directly 0.029. So this will come how much, 0.029. यहाँ 2 डिजिट है, एक डिजिट यहाँ बढ़ा करके हम डेसिमल यहाँ रख देंगे. सो दिस विल बी दी आंसर ऑफ A, B, C, D of question number 5. 6, 7, 8, 9. This is also question number 5 is over. Now we will see question number 6. So this is question number 5 is completed. Now see what is the question number 6. That is word problems. Word problems में question number 6. Question number 6 is what? A vehicle covers a distance of, question number 6. In this question, what is given? A vehicle covers a distance of 176.96 किलोमीटर in 14 लीटर of पेट्रोल. एक व्हीकल 14 लीटर पेट्रोल में 176.96 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. सो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर? सो जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है. गिवन में क्या है? एंड इट इज आस्क्ड दैट कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस जाएगा. सो अकॉर्डिंगली in how many liters it is going? 14 liter of petrol. In 14 liter of petrol, 14 liters of petrol, distance covered, distance covered कितना डिस्टेंस? 14 लीटर में पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जा रहा है? 176.96 किलोमीटर. 1 किलोमीटर 19 हो गया, 96 किलोमीटर इन 14 लीटर. सो in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड, ये हमको फाइंड आउट करना है. 14 लीटर में इतना डिस्टेंस जाता है तो 1 लीटर में कितना जाएगा? तो 1 लीटर में सीधी सी बात है, 14 लीटर में जितना जाएगा 1 लीटर में कम जाएगा, और कम के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है. सो दिस विल बी दी सोल्यूशन. क्या हो जाएगा? इन so that this will become how much? 176.96 divided by 14. इसको 14 से डिवाइड करो, जितना आएगा वो आंसर. 14 1 जा 14, 3 14 2 जा 28, 8 remaining 14, 12 44 जा
this will come, divide this one. So 14 1 ja 14, 3, 36, 14 2 ja 28, 8, 89, 89 को 14 से डिवाइड करो फिर 14, 14 6 जा 84, फिर 46, 46 में 14 3 जा 42. So this will come 12.6 approximately 12.63 kilometer it will go. So just see the answer how much it is coming, 12.64 kilometer. So in this one 6 14 1 ja 14 3, 14 2 ja 28 8, 89, 14 6 ja 84, 5 is remaining, 14 3 ja 56, 14 4 ja will go 14 4 ja. So is this will be itna kilometer, this will be the answer of this question. Okay sir. So till 6 we have covered today. Now 7 8 9 you can try yourself. If it is not coming, so we will see in the next class. At least for the homework today, complete exercise number 3.3, question number 1 to 6. So this is your complete, and remaining you can try yourself, and if it is not coming, so we will see in the next class. Thank you.